Hi, you're watching India Post Live, India's first web TV news conversation online. I'm Shivraj, and today we're discussing the piece Scuttled. That's right. On the 11th of June, an initiative by some Jamia Millia University and Delhi University students going to meet Narendra Modi to ask permission to take a peace march to the border was scuttled, with the Delhi police stepping in and arresting them. So what is really at stake? Joining us in the conversation is senior journalist Amit Sen Gupta, and of course one of the students who was detained, Praveen Singh, who is from the DU Students for Peace convener. Amit, I think the larger issue, when we've had the last government talking about making borders irrelevant, this government with the swearing in, bringing in leaders from across, and then suddenly this happening is a little out of sync, isn't it? Yeah, you see, if you go by the technicality of it, I know I was also once a JNU Students' Union president, and we've had several similar situations where students have taken out processions and the police has stopped it and detained you, etc., and put you in jail also. Let us not get into technicalities. Even if Manmohan Singh had been Prime Minister, they would have also still stopped the students. But here the question of symbolism is much more important, in the sense that the students, as far as I can understand, are playing on a symbolic, more than a symbolic kind of a gesture of continuing the peace process beyond the same symbolism which the new Prime Minister did during the oath-taking ceremony. So what the students are actually trying to say is that we are also playing with the same idea of unity, of harmony, of borders, of humanity sans borders, of a South Asian, perhaps a South Asian confederation, of a kind of a European Union kind of a sense where walls are broken between various nations, and the peace process and track 2, track 3, track 4 gets value. Technically, the cops might say that they would stop them if they go to the Prime Minister's house, requisite, but they were not even allowed beyond the Maurice Nagar Chowk, which is the Delhi University Chowk. So, technically, I guess that is the issue. But I think both the Prime Minister and this government and the Delhi police should look at the larger and the big picture, and which the students are trying to project. तो प्रवीण, अरेस्ट को छोड़ के जो अब आप कोशिश कर रहे हैं, उस पे रिएक्शन कैसे हुए हैं? क्या हुए रिएक्शंस आपके रिक्वेस्ट पे कि आप जाए और कैद आज़म यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से मिले बॉर्डर पे? हाँ, हमें अभी इस तरीके का जो स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन मिला है, सपोर्ट मिला है ज़्यादातर, लेकिन गवर्नमेंट से, सरकार से, क्योंकि ये तो जैसे अमित जी कह रहे थे कि वो तो हो गई थी टेक्निकलिटी पे, पर जो लार्जर इशू है कि आप ये करना चाहते हैं, आपने गुजरात गवर्नमेंट से, जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, उनसे परमिशन भी ले ली थी उस टाइम पे, सही? हाँ, बेसिकली हमारा ये रिक्वेस्ट था कि हम लोग पहले से ही कैंपेन में रखे हुए थे इस बात को कि जो भी नई सरकार बनेगी, यूपीए बने, एनडीए बने, थर्ड फ्रंट, फेडरल फ्रंट, जो भी आती, हमारा ये था कि जो भी सरकार बनेगी हम चाहेंगे कि इसका फ्लैग ऑफ उसका नेता करे, जो नई सरकार बने। तो उसी को हम लोग, उसी कैंपेन को बढ़ाते हुए हम लोग जा रहे थे प्रधानमंत्री जी के यहाँ एक रिक्वेस्ट लेकर के कि, और चूँकि ओथ सेरेमनी पे आपने कॉल भी किया था सार्क के सारे हेड्स को, तो हम उसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए कि भाई जनता को भी इन्वॉल्व किया जाए इस तरह की पीस पोसेशन में, मतलब इस तरह की बात में। अभी तक क्या होता है कि डेलीगेशन में जो भी करना चाहेंगे, लेकिन एटलीस्ट पीपल टू पीपल, जी, पीपल टू पीपल टॉक तो शुरू हो, ये डेलीगेशन लेवल पे हमेशा होता रहा है। हाँ, उसके बाद बॉर्डर पे कुछ भी हो जाता है और फिर ये लोग वेपन्स खरीदना और तमाम चीज़ें, कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। तो अच्छा, ये हादसा तो हो गई जी, लेकिन अब आप क्या करेंगे? हम लोग सर फिर से अपना कैंपेन तो हम लोगों ने बंद नहीं किया, कैंपेन हम लोगों का चल रहा है, हम लोग स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और अक्रॉस बॉर्डर सोशल मीडिया के थ्रू क्या आप बातचीत कर रहे हैं उनसे? जी, हमारी बातचीत जो है वहाँ के लाहौर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है लाहौर का, वहाँ के स्टूडेंट्स और कुछ लोगों से और एक्टिविस्ट जो लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है। कामरान इस्लाम करके हैं जो एक्टिवली काम करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। एक जंग अमन की आशा चलती है जो यहाँ के लोग चला रहे हैं, तो बीना सरवर मैम है, आप जानते होंगे शायद, तो उनसे हमारी कुछ कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं, बातचीत चल रही है कि हम लोग आएँ कैसे, और कुछ वो भी टेक्निकलिटीज़ बताते हैं कि बहुत ही इम्पॉसिबल सा है कि यहाँ से साइकिल लेकर के वहाँ अंदर जाओ और फिर वाघा बॉर्डर से इस्लामाबाद तक साइकिलिंग करने देना, ये पाकिस्तान सरकार शायद करने ना दे, या करे भी तो बहुत सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जो हालात हैं अभी। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग ये एक कैंपेन को लेकर के वाघा बॉर्डर तक जाएंगे 1 अगस्त से, जो कि 14 दिन का करीब कैंपेन होगा, जो रास्ते में हरियाणा और पंजाब में कम से कम हम लोगों को बताएंगे कि हम लोग ये कर रहे हैं और लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक रिएक्शंस गवर्नमेंट से क्या हुआ है? अभी तक कोई रिस्पांस हमारी सरकार से कोई भी नहीं आया इस तरीके का।
अभी जो नई सरकार बनी, जब पिछली बार हम लोग चला रहे थे तो लगभग सारी वी एस अच्युतानंदन, कॉमरेड वी एस अच्युतानंदन जो अपोजिशन लीडर थे वहाँ के, उन्होंने खुद फ्लैग ऑफ करने के लिए आए थे। और बेंगलोर में हम एक्स प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा साहब से भी इसके लिए वो लिए थे, सिग्नेचर कैंपेन कर रहे थे हम लोग, उन्होंने भी सपोर्ट किया था इसको। एक जस्टिस संतोष हेगड़े जी हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। हमने पेज पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह डाले भी हैं हमने फेसबुक पे। हम लोगों का इतना बड़ा रिसोर्सफुल नहीं है हमारा आंदोलन, एक कल्चरल मूवमेंट। लेकिन हम लगभग मुख्यमंत्री लोगों से मिले, शीला दीक्षित भी थी यहाँ पे, एक वो हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हमें मिले थे वहाँ पे राजस्थान में, और वो अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने वो भी मिले थे और सपोर्ट किया था। तो हम छोटे लेवल पे जहाँ भी हम लोग पहुँच सके थे, और तो वहाँ तक हमने अपनी बात पहुँचाई और लोगों ने सपोर्ट किया। फिर से बात शुरू की नए चीफ मिनिस्टर से, और जहाँ पे सरकार जी, अभी हम लोगों का एग्ज़ाम खत्म हुआ सारे स्टूडेंट्स का, तो हम लोगों ने यही प्लान करा था कि स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम के बाद घर चले जाते हैं, उसके बाद जैसे तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको अभी शुरू कर रहे थे सर। तो अभी हमने पहला यही रखा था कि नई सरकार बनी है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाया जाए, और ये पहले हमने ईमेल के थ्रू जो वेब पेज है प्राइम मिनिस्टर का, उस पर हमने कई बार भेजा। हमने अपने थाने में, मौरिसनगर थाना, वहाँ इंटीमेट किया, हर जगह जो भी कमिश्नर जो है दिल्ली पुलिस के, उनको इंटीमेट किया, ट्रैफिक पुलिस के कमिश्नर को इंटीमेट किया कि हम लोग ये इस टाइम को करेंगे। स्पेशल ब्रांच से हम लोगों को फ़ोन भी आ रहे थे कि आप कहाँ पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चला कि मतलब कोऑर्डिनेशन कहाँ गड़बड़ हुआ दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच या फिर पीएमओ का, कि हमें यहीं पे रोक दिया गया। Okay. So we also joined online from Hyderabad by Arindam Majumdar, who's a journalist with TV5. Arindam, I'm sure you saw the reports of the students being stopped when they were trying to go and petition the Prime Minister to take out this peace rally, go all the way into Pakistan, send out a larger, broader message of peace. Why do you think that this has happened? First of all, whenever I saw the report in Times of India, it's the Delhi police which committed the mistake. So I don't think it should be taken so seriously and blaming the whole Indian government out of this issue. What Mr. Modi had done during his swearing-in ceremony, calling all the SAARC leaders, he just sent a good signal across the border. But very importantly, when you want to build some connections with your neighboring countries, and with Pakistan, with whom we share a very controversial relationship, it's very much important that there should be people-to-people connection. Exactly, and Narendra Modi recently said that to be good neighbors, you have to be happy neighbors. So an initiative like this is really, you would imagine, would really go a long way in doing that. We share the cuisine with them, we share the culture with them. There's not much difference between India and Pakistan. So when citizens of both the country, as this deputy are trying to do, that's the initiative which will build a bond between the nations. Diplomatic relations goes on a different level, but when we connect together, there's a people-to-people connection, only then can relations develop. So like, congratulations for taking such an initiative, and I'm sure there must be some coordination problem between the intelligence branch and the Delhi police, because all right, always how our intelligence people. So I think it's a question of coordination. That's correct. So let's get reactions in. Thank you so much, Arindam, there from Numan Ahmed Khan, who's also joining us from Delhi. Numan, what do you make of the reactions that you've got so far? Because obviously a lot of public is very concerned that you be allowed to do this peace march. What have the reactions been? देखिए, हम लोग जब एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, उस वक्त हम लोगों ने इंटरव्यू लिया छात्रों का, जो हम लोग ने एक कैंप लगाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के पास, और वहाँ पे लोगों का इंटरव्यू। सब लोग चाहते हैं कि हम लोगों को एक पीस माहौल मिले, एक शांति का माहौल मिले। लोग नहीं चाहते हैं कि बार बार लड़ाई और झगड़ा, जैसे कि हमारे पड़ोसी आज ही नैनमोदी अपने डिस्ट्रिक्ट में रहे थे, वहाँ भूटान में जो वो संबोधित कर रहे थे वहाँ के सांसदों को, तो वो बोल रहे थे कि जो हमारा पड़ोसी मजबूत होगा तो हम मजबूत करेंगे। तो उस तरह से हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा जो ये आंदोलन है, कि पड़ोसियों को एक अच्छा रिश्ता बनाए। जैसे कि बहुत सारे अभी पहले भी वाजपेयी जी के टाइम में भी एक माहौल चला था कि वो लोग अपने नेबर के साथ, अपने पड़ोसी के साथ अपना मजबूत संभाल करते थे। बस भी चलाई गई थी, लेकिन सिर्फ कार के लोगों के कारण बंद। तो हम लोग चाहते हैं कि जो ये आंदोलन है, ये जनता से शुरू हुआ। जनता जो है, ये अभी जो वार्तालाप हो रही है जो सरकार के बीच में, वो जनता के बीच में, जनता जो है वो जागरूक हो, और जनता खुद अपने पड़ोसियों से कि हमारा कैसा रिलेशन होना चाहिए, इसके बारे में जो सोचती है उसको वो इम्प्लीमेंट करे, न कि
सरकार इम्प्लीमेंट करती है, सरकार के अंदर क्या बात होती है वो जनता से निकल के नहीं आ पाती है। और उसके बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा था, बॉर्डर पे कुछ कंफ्लिक्ट होने के कारण युद्ध शुरू हो जाता है, युद्ध के बाद फिर थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं, अपना अपना जो पॉलिटिकल होते हैं उस पर चले जाते हैं और अपने बात करते हैं। ठीक है, जनता जो है वो नहीं जुड़ पाती है। अच्छा, जनता से नहीं ना, तो फिर देश के जो लोग हैं वो ये बातों को उठाएंगे तो फिर सरकार को लगेगा कि हाँ अब लोगों को फिर मजबूरी उनकी जो पॉलिटिकल Okay. Thank you, Numan ji. And clearly, their reactions, and like Numan said, talking to those during the admission process. Let's take a look at some of the reactions coming in from students to the idea of being able to march across the border. हमें हमारे पड़ोसी देश के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए? मतलब हमारे जो पड़ोसी देश के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं वो अभी तक अच्छे हैं। इनफैक्ट जो सबसे खराब चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, जैसे जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हुए थे उसमें ऐसा बोला गया था कि आप पर्टिकुलर नेता की बुराई करेंगे आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। पड़ोसी देश के जितने पड़ोसी देश हैं सबके साथ हमारा रिश्ता बढ़िया होना चाहिए। हमारा पड़ोसी देश के साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए लाइक जैसे हम अभी रहते हैं हमारे नेबर्स के साथ, घर के पास वाले नेबर्स के साथ। हमारा जो पड़ोसी देश के साथ रिश्ता होना चाहिए वो बहुत ही एक पोलाइटली, एक विनम्रता के साथ होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी चीज़ें हैं, कुछ भी जो हम अपने देशों से आयात या निर्यात करते हैं वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से हों और जो लोगों के बीच में लिंकअप है वो अच्छी तरह से आगे बढ़े। मैम, इसके लिए आप अपने प्रधानमंत्री जी और पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करेंगे? उनसे यही अपील करेंगे कि जितना भी अभी इन्होंने जो भी हमारे देश में चल रही हैं प्रॉब्लम्स, हमें उससे थोड़ा सेटल करना चाहिए, बात करके देखना चाहिए और अपने अपने देशों में थोड़ा संभाल लेना चाहिए कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें आगे। मैं उनसे यही अपील करूँगा कि बाकी पड़ोसी देशों से अच्छा रिश्ता रखें, जिससे कि हम लोग का फ्यूचर जो है अच्छा हो सके। And we have Praveen Singh's group to thank for all those reactions that you got, Students for Peace. But coming back to you, Amit, I think, we've seen an exchange of letters between Nawaz Sharif and Prime Minister Narendra Modi. There was talk of how Narendra Modi made it very clear that right now we need to prioritize, the common agenda of taking people out of poverty, education, and greater interaction. So I would imagine that something like this would be welcomed a lot at that level. You see, as one student had very cryptically said that it was stated during election campaign, rather vicious election campaign, that those who are opposing him should be sent to Pakistan, etc. And so there is a difference between the rhetoric and the viciousness which was there in election campaign and the ground reality and the bitter realism and the real politics of the ground reality. This is a kind of a catch-22 scenario for any political party in power, right. However powerful that person may be or how big over the mandate it can be for them. Unless you just bulldoze all public opinion and all historical necessities like what George Bush did by waging war, on false notions of WMDs to Iraq, the fallout of which is still being seen. And in fact, till it's yesterday. flagging again. Till yesterday, right. Tony Blair is not saying that he is not responsible, etc. Right. I'm saying. Well, the historical narrative is still moving, and narrative is affecting local people. Thousands of people are getting affected. People are getting killed, etc. What I mean to say. But interestingly, Nawaz Sharif, when he came here, very openly said that he wants to pick up where Vajpayee left off. Yeah. Obviously, understanding that Narendra Modi still will work under certain, frameworks. A lot of water has passed out of the bridge. But the whole idea of the march across, the bus across, it is symbolism. But do you think that the government is really going to go that way? No, I was trying to come to that only. There is a kind of a theory which is within the Indo-Pak peace process or the Indo-Pak dialogue or the Indo-Pak kind of a rhetoric, is that when there is a right-wing government, for some odd reason, they take the hard decisions. They take a much more softer position vis-a-vis Pakistan, right. and it is preferable for the Pakistanis to talk to a government which is which is supposedly more hawkish and more right-wing, rather than those who are camouflaged
as a secular or camouflage, just soft and tolerant. So you can see that the post, of course, the Bombay carnage, there was a difficulty of having a dialogue with them. But Manmohan Singh really did not did not succeed. But even Bajpayee is even a minimalistic form of. But Manmohan Singh had an interesting doctrine that where he said that actually the two Kashmirs could look at each other as separate, as provinces governing their people's relations, whereas of course the hard issues of security and international relations be handled by a federal government. But the fact that borders, while they exist, we can't change them, they can be rendered irrelevant. The problem with Manmohan Singh, as of now, as you know, that even his symbolism was very, very minimalistic, and it did not have great political populist kind of a power, which Bajpayee was able to generate. Absolutely. Despite the hand of friendship in Srinagar, etc., Insaniyat and all. But despite that, let us not forget that Kargil also happened during that time, and also Operation Parakram. And that's happened. A conundrum of the Indo-Pak relationship. Yeah. We take 2 steps forward and 3 steps back. And then 1 year we put our forces on the border, and we kind of a war hysteria was created. So even let us not completely forget that the Prime Minister belongs to a party whose bread and butter is also anti-Pakistani rhetoric. Absolutely. And they thrive on this bread and butter thing. So in that context, briefly, I would say that if the students are giving an idealistic position, and if students will not give an idealistic position, surely we are not going to expect idealistic position from hardened politicians or diplomats who deal with very cold-blooded nuances. Here they are eclectic, they are innocent, they are idealistic, and they're saying, why not? Why can't we have cross-border friendship? And this is something which is a very beautiful thing, which is only young people are able to. It also proves that those who are actually saying that Modi has won through an aspirational vote, this is also an aspirational. Absolutely. And this is the very constituency he appealed to, the first and second time voters as well. True. So let's go across to Pankaj Kumar, who's also one of the students who is running this initiative. Pankaj, from your point of view, what really is the next step that you want to take this forward? I will not start my argument with a lot of theologies and a lot of going into a lot of encyclopedia of governance, how the governance acts. But, Sure, because it's about people meeting other people and sharing cultural experiences. I would like to genesis my argument by quoting a novel by Amitabh Ghosh, which I read in first year. Called Shadowline, double quote called Shadowline. I want to quote one of the incident which narrator grandmother went through. They have shifted from Bengal when Bangladesh division when Bangladesh was divided from India, when Bangladesh dissected from India politically. So at that time the family of narrator of the Shadowline by Amitabh Ghosh has been shifted psychologically, physically, politically into Bangladesh. So there was an incident when narrator grandmother was want to visit Bengal once again. So she was in a flight. And when the flight was up above the sky, above the cloud. At that time, when she looked down, she found no line, no border, no wall, no hindrance exists between India and Bangladesh. At that time, she was really, really confused, and she was really worried about. What sort of psychology, the people, the government play with, because everything became shadow, nothing existed. Okay. So when I received a call from Praveen Bhaiya, I was really anxious, and I was really strengthened from within to join this campaign. And as far as I can extend my imagination, or as far as I can extend my views further, it's very important for young students, a young generation, a generation like us, to take this step, of a brotherhood, of a peace, because after all, we are the one who has created this hindrance. After all, we are the one who has created this barricade, between the brothers, between the countries, between the district. But there's nothing but a superficial walls, a superficial imagination, a superficial camouflage facade,
It's nothing else, you know. Right. Uh, Right. There was a writer. Yeah, please. There was a theologist who told that once we remove the barrier of language and border, everyone's emotions work the same. So by this, I want to I want to argue that we students are really passionate about this. If we get a support from back, if you get a bold and heavy support from the people who are standing in a power. All right. And Amit, I think what's interesting is that you and I come from a milieu where maybe our immediate, parents have collective memories of those partition times. But this milieu that we're operating in is very different. They don't care about what went in the past. They want to look forward. The old divisions, the old rankling, like he said, linguistic and other commonalities are going to obviously play. Social media is a game changer as well. Yeah, he does not carry any baggage. Their generation does not carry any baggage of hatred and hate politics and that kind of divide. In the sense, my generation also did not carry. My father and mother also came from East Pakistan, which later became Bangladesh. In partition, they also came from there, and like many people came from Punjab. Kushwant Singh's train to Pakistan as much as Ritik Ghatak's films, which always had a longing for the old United Bengal. But that stuck with you or and us. Shadow Lines, Right, as he's right. talking of Shadow Lines, that they're going back there. In fact, they die in a communal violence scenario in Shadow Lines in the end. But what I mean to say, we also did not belong to our generation. But what will be surprising to you to know is that even my father and mother and that generation who suffered when he came back from partition, they also did not carry the baggage of hate politics. Actually, they believed in a secular, pluralist India. And in my house, people from Bangladesh, Muslims, they would come and eat food, and we would listen to Qazi Nazrul Islam's music in our house, and we were never trained to feel hatred or animosity towards any other religion. But so, Pakistan is different. I mean, there is I'm a sure, collective. But Pakistan. Generations let before me quickly us. say that Right. Pakistan, even now, you ask any journalist, and there, apart from hundreds of stories of Pakistan people, ordinary people coming here looking for their own friends. Actually, when you travel to Pakistan, they kill you with kindness. They kill you with kindness. Absolutely. They will not take money I've been from about 3-4 times, and they're very friendly. They roll out the red carpet. Because as they are right, because in a very, very telepathic manner, people have captured that the bonding between Indian and Pakistanis go much beyond diplomacy. It's rooted in culture, history, food, cuisine, memory, so much. So all the tragedy and the division and the hate politics has really not affected the bonding between India and Pakistan. So let me, Praveen, give you the last word because we're running out of time. In the course, now that of course your exams are over, you've actually dealt with this whole incident. Now going forward, what are your next action points? What are you going to do now? हम लोग फिर से स्टूडेंट्स के बीच में कॉलेज 24 जून को हमारे यहाँ पे एडमिशन शुरू हो जाएंगे जी। कट ऑफ का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नुक्कड़ के थ्रू, म्यूज़िक बैंड के थ्रू हम स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे हैं। कॉलेज टू कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, JNU जामिया से ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, JNU से भी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, IITs जाएंगे और भी तमाम इंस्टीट्यूशन जाएंगे। उसके अलावा हम लोग जो भी हमारे नए MPs चुन के आए हुए हैं, जो कि बड़े बड़े वादे करके आए कि हम आपको ये दुनिया देंगे, है ना, चाहे वो चुनावी वादे, हम चाहते हैं कि हम आपका हाथ मजबूत कर रहे हैं इस कैंपेन के थ्रू। आपका जो आप FDI करने जा रहे हैं डिफेंस में 100%, पता चले मेरे गांव के बगल में कोई बुलेट्स की फैक्ट्री खुली हुई है, मतलब गुड़ की फैक्ट्री की जगह इस तरह की चीज़ें खुलेंगी आगे के टाइम में। हम चाहते हैं ये ना हो, एक स्कूल खुले, एक हॉस्पिटल खुले, क्योंकि जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय में इन सारी बातों को लेकर के हम हॉस्टल्स की बात कर रहे थे। उम्मीद कर रहे कि होगी अब अगर हम लोग जी हम लोग तो करेंगे, हम लोग तो यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पिछली पीढ़ी के बीच में जो भी हुआ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अगली पीढ़ी के लिए ये छोड़ के ना जाए। तो ये उम्मीद के साथ ही हम जा रहे सारे तरफ। Thank you and best of luck for the entire initiative. Thank you. Thank you. Thank you, Amit. And thank you so much for joining us there with your thoughts. You can also continue the conversation by joining in on Twitter, #IndiaPostLive. Do log on to our website, indiapostlive.com, and continue the conversation. Thank you for watching.